Delhi heights continue to breathe toxic air as the national capital and its neighbouring areas see AQI hovering in the severe category. Delhi Environment Minister Gopal Rai has jumped into action and a slew of measures have been announced to combat the pollution. Now, these include preponing the winter break in schools, which usually starts in December. Now, all Delhi schools have been shut from today till November 18th. The Delhi government is also set to ban entry of non-Delhi registered commercial cabs booked via apps like Ola and Uber. Another unique measure that the government is mulling over is to induce artificial rain to manage the pollution. Delhi Environment Minister Gopal Rai held a meeting with scientists from IIT Kanpur who explained that artificial rain can be attempted through cloud seeding method, which requires presence of clouds or moisture in the atmosphere. The suitable condition for which is likely to develop around 20 to 21st November. The minister has asked the IIT scientists to prepare a proposal on the same by Thursday, which will be then submitted to the Supreme Court. Now, even the odd-even car scheme, which was to be implemented from a day after Diwali, will only come into force once its effectiveness is reviewed by the top court. पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से देखिए आंखों में भी, इवन नोज से एंटर कर रहा है ना, तो चेस्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है. हमारे कुछ मतलब टीम के मेंबर वो भी बीमार हो गए हैं. तो काफी ज्यादा ये हैगा कि इतनी, और खासकर ये दिल्ली में ही हो रहा है. मैंने तो सुना रेड जोन में भी आ गया है. तो इतना नहीं होना चाहिए था. इसके लिए कुछ तो होना चाहिए ना कि करे हमारी पब्लिक के लिए और सेफ हो वो. तो मेरे को, और जो हमारे ओल्ड एज, चलो हम तो यंगर्स है, जो हमारी ओल्ड एज पर्सन्स है ना, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है. एक तो पोल्यूशन के वजह से धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा, कुछ ज्यादा तो दिखाई नहीं हो रहा. ठीक है. सेकंड थिंग ये है कि उसके वजह से हमको आंखों में जलन और जैसे कि हार्ट में प्रॉब्लम भी हो जाएगी इससे, जिसे सांस लेने में अब अंदर इनहेल नहीं कर पा रहे हम. ओके. और इस वजह से तो गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए इसके लिए कि क्या करना है. और जो ओल्ड एज लोग हैं वो तो इवन निकल ही नहीं पा रहे हैं, जो क्योंकि उनके जो मतलब प्रॉब्लम्स होती है, घुटने में दर्द होता है, ये सब चीज़ें. तो ये पोल्यूशन के वजह से तो वो लोग और निकल नहीं पा रहे, घर पर ही है. बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है. अभी तक तो धूप बाहर निकल जानी चाहिए थी. धूप तो टच ही नहीं करती है ग्राउंड को. इट्स नॉट हेल्दी. लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, but I think it is doing more harm than good, which is again very unhealthy. Let's go across to my colleague Ishika, who joins us live on the broadcast. Ishika, not a very good morning for Delhi Heights, as we are also learning that the Delhi government has jumped into action and proposed several various schemes. Right now, it's early winter vacation for schools in Delhi. What is the ground situation around you? Well, Simran, if we talk about the ground situation, then even today the air quality in the national capital continues to remain in the severe category. I'll ask my cameraman to show you around, and you can clearly see that even right now there is smog that continues to be present in the air. At the moment, the air quality index that is recorded in the national capital stands at 421. And as you rightly said, after Supreme Court's observations that came in, the government, the state government has now jumped into action, and series of measures have been announced. Now, the very first being that, the children's winter break has now been preponed. That means from 9th of November to 18th of November, it has been declared winter break for all the classes except classes 10 and 12. Now, apart from that as well, we did see how the Environment Minister Gopal Rai emphasized on the fact that from today itself, the smog tower in the Connaught Place will be working in its full capacity, and we are present just outside it. You can clearly see and hear that the smog tower with 40, high pressure fans inside it is currently working, fully functional. And, but definitely we do see that the screen that continues to be present, from where you can clearly see that the air quality index here in CP, that is not working even right now.
certainly we'll have to wait and watch, when does that work. But certainly, let's hope that this will bring some impact, on the ground situation here, because the air continues to remain in the severe category. Apart from this as well, if we talk about the other measures, the Environment Minister, in fact, yesterday also held a very high-level meeting with the IIT Kanpur, and in fact now has announced that the artificial rains will now be induced around 20th of November. So these are the measures that have now been announced by the government, but the question remains that how much impactful are they actually going to be on the ground? Over to you. Right, Ashika, as you correctly pointed out, that we have to wait and watch as to how much impactful these measures are on ground. On that note, I appreciate you joining us live. Viewers, let's take a look at this report filed by my colleague Bhavna from Anand Vihar. राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर की वायु गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है। आनंद विहार की बात करें तो आज AQI 504 दर्ज किया जा रहा है। वहीं सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से पानी का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार सुबह से शाम तक यहाँ पर पानी का छिड़काव इसी तरह से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो AQI है वो बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। 999 कई दिनों तक यहाँ पर AQI रहा। वहीं अगर दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त 450 के आसपास AQI है। वहीं दिल्ली में ग्राफ 4 लागू है। इसके साथ ही ऑड इवन फॉर्मूला जल्द ही अपनाया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने का फैसला लिया है कि 20 तारीख को दिल्ली में बारिश कराई जाएगी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो उसके बाद मौसम साफ हो सकता है, AQI लेवल कम हो सकता है। नहीं तो आप सड़कों पर देखिए किस तरह से लोग अपने हेडलाइट जला के चल रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होने की वजह से धुंध और ये प्रदूषण की धुंध है जो लोगों को परेशान कर रही है। लोगों को तरह तरह की दिक्कतें हो रही है। और वहीं आने वाले समय में दिवाली है और दिवाली के बाद अगर पटाखे जलाए जाते हैं दिवाली पर तो मौसम और ज्यादा खराब हो सकता है, वायु गुणवत्ता और ज्यादा खराब हो सकती है और स्थिति भयावह हो सकती है।